Hi, good evening, everyone. My name is Bhupendra Singh Rathore. I'm your coach for this Digital Course Academy, Millionaire Club, and the Coach Mentorship Workshop. And today we are going to discuss as to how you can find your niche. Okay? ये बहुत ज्यादा लोग मेरे से सवाल करते हैं, सर मुझे निश कैसे मिलेगा, सर मुझे निश कैसे मिलेगा, सर मुझे निश कैसे मिलेगा, निश कैसे मिलेगा, निश कैसे मिलेगा, निश कैसे मिलेगा। निश का मतलब है कौन सी ऐसी एक स्किल है जिसमें आपकी मास्टरी हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट गेटिंग द निश इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब क्या है? गेटिंग द niche means what? Getting the line. All right, so there are two kinds of niche. One is macro niche, one is micro niche. मतलब क्या है, थोड़ा सा हिंदी में समझाता हूं। गेटिंग द niche means what? लाइन मिलना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, ट्रेनर बनना है, या फिर बिजनेसमैन बनना है। और बिजनेसमैन भी बनना है तो ट्रैवल लाइन में जाना है, या फिर मुझे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाना है, या मुझे ट्रेडिंग में जाना है, या फिर मुझे रिटेल में जाना है, या फिर मुझे होलसेल में जाना है। सो लाइन मिलना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो निश का मतलब है लाइन मिलना। विच लाइन डू यू रियली वांट टू वर्क इन? नाउ यू आर प्लानिंग टू मेक अ मिलियन, ऑलराइट? अब आप में से कुछ लोग अगर बिजनेस में हैं एंड यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, और इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग अ मनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रोबेबली दैट लाइन इज नॉट गुड इफ यू आर नॉट मेकिंग मच मनी। इफ यू आर मेकिंग अ गुड मनी, इसका मतलब है कि ऑलराइट, यू हैव गॉट द लाइन, राइट? सो नाउ लाइन कैसे मिले? ये लाइन मिलना सबसे जरूरी है। अच्छा, लाइन मिलने के बाद उसमें भी फिर लाइन मिले। जैसे ट्रेनर बनना है, अगर आपका ये फिक्स हो गया तो ट्रेनर में मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या फिर कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना है, या फिर बिजनेस कोच बनना है, या फिर मेरी तरह ऑलराउंडर बनना है, या फिर राइट सॉरी, या फिर आपको 1-to-1 कोचिंग करना है, या सिर्फ आपको बच्चों का ट्रेनिंग करना है, या आपको सिर्फ महिलाओं का ट्रेनिंग करना है, या आपको सिर्फ बुजुर्गों का ट्रेनिंग करना है, या आपको सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी पे ट्रेनिंग करना है, या सिर्फ आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करना है, या सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड जो कि आपका खुद का टॉपिक है, आपने बुक लिखी है, या स्पिरिचुअल ट्रेनर बनना है, या योगा ट्रेनर बनना है। मतलब व्हाट डू यू रियली वांट टू डू? ओके, सो देयर इज अ निश एंड देयर इज अ माइक्रो निश। सो मैक्रो निश यानी बड़ा निश, यानी ट्रेनिंग। ओके, उसके अंदर माइक्रो निश, क्योंकि अभी मैं, अच्छा, मैक्रो निश से भी अगर जाए तो ट्रेनिंग एक हो गया, ट्रेनिंग में भी फिर बिजनेस कोचिंग इज द मैक्रो निश। अब बिजनेस कोचिंग में आप आ गए सेल्स कोचिंग, ब्रांडिंग का कोचिंग, या फिर मार्केटिंग का कोचिंग, या फिर एचआर का कोचिंग, या फिर आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का कोचिंग। सो व्हाट इज योर माइक्रो निश? राइट, सो मैक्रो निश, माइक्रो निश, ये दोनों जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला तो है मैक्रो निश फाइंड आउट करना। राइट, सो मैक्रो निश कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो निश आपको समझ में आया होगा, निश यानी लाइन। ऑलराइट, कौन सी लाइन है? अच्छा, निश मींस व्हाट एम आई रियली गुड एट, कि मार्केट मुझे किस चीज से जाने। इसका पहले एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं और मैं एमबीबीएस हूं, राइट, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? मुझे हर आदमी आएगा, अपनी जनरल कोल्ड फ्लू ये वो उसके बारे में मुझे चेक कराएगा, और उसके बेस पे मैं उसको मेडिसिन दूंगा। पर सेशन मुझे मिलेगा 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया। लेकिन अगर मैं हार्ट सर्जन हूं, या मैं न्यूरो सर्जन हूं, या फिर मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, तो मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक मिलेगा, क्योंकि दूर दूर से लोग कहेंगे अच्छा हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है तो वही डॉक्टर अच्छा है, अच्छा न्यूरो सर्जन है तो वही अच्छा है। तो जैसे ही थोड़ा माइक्रो निश हो गया तो लोग आपको ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं। ओके, इसको एक और चीज से समझते हैं, जिसका मैक्रो निश है, राइट, वो एक तरह से एक ग्राउंड में, मैं आप लोगों को एक ग्राउंड देता हूं और मैं कहता हूं कि भैया हमें कुआं खोदना है। तो आप क्या करें, आप एक जगह जाएं और 10 फीट का गड्ढा खोद दें, फिर दूसरी जगह जाएं वहां 5 फीट का गड्ढा खोद दें, फिर तीसरी जगह जाएं वहां 3 फीट का गड्ढा खोद दें, फिर चौथी जगह जाएं वहां 15 फीट का गड्ढा खोद दें, पांचवी जगह 1 फीट का गड्ढा खोद दें। तो क्या कभी कुआं बनेगा? नेवर। लेकिन आप एक ही जगह पे हैं और एक ही जगह खोदते जाएं, खोदते जाएं, खोदते जाएं, खोदते जाएं, खोदते जाएं, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर नीचे गए और पानी निकला। ऑलराइट, क्योंकि 10 खड्डे आपने 5-5 मीटर के, 3-3 मीटर के, 2-2 मीटर के खोद दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुआं नहीं बनेगा। आपको एक ही खड्डा लंबा डीप तक खोदना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी बिजनेस में लाइन निकाल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ
शुरुआत आपको एक निश से करनी है. अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड, कैन यू बिकम मास्टर ऑफ मेनी निश? यस यू कैन. जैसे अगर एग्जांपल लें एंथनी रॉबिन्स का, सो एंथनी रॉबिन्स लाइफ कोचिंग भी करता है, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स भी करता है, एंथनी रॉबिन्स बिजनेस मास्टरी का प्रोग्राम भी करता है, एंथनी रॉबिन्स के और भी कई सारे प्रोग्राम्स है. ऑलराइट, सो कैन ही अफोर्ड टू हैव मल्टीपल निश? यस. राइट, क्योंकि अब वो धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो ऑल द रिलेटेड फील्ड्स यू कैन बिकम मास्टर ऑफ. राइट, तो जब मैंने शुरू किया था तो आई वाज ओनली कंडक्टिंग इंग्लिश कोचिंग, स्पोकन इंग्लिश. उसके बाद जब मैंने शुरू किया, धीरे धीरे मैंने देखा, अच्छा मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी पब्लिक स्पीकिंग वगैरह और ये सब भी उसमें करना लगा. फिर मैंने उसके साथ साथ मेमोरी एनहांसमेंट क्लब कर दिया. तो अब मैं बन गया एक ट्रेनर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स. ओके, तो ये मेरा निश हो गया स्टूडेंट टारगेट करना. ओके, स्टूडेंट टारगेट करने के बाद धीरे धीरे मैं आगे, सो नाउ स्टूडेंट्स को टारगेट करते करते धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और मैंने फिर कहा, अच्छा इन तीनों में जब मेरी मास्टरी हो गई, स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करने में 2-3 साल मैंने अच्छे से ट्रेनिंग किया, लेकिन एक लेवल के बाद मुझे लगा कि यार यहां से तो पैसा नहीं आ सकता ज्यादा. ओके, तो मैंने कॉर्पोरेट में जंप किया और 3 साल मैंने लगातार कॉर्पोरेट्स में काम किया. एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मेरा निश बन गया. और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी अगेन जूनियर लेवल के लोगों के लिए जो ट्रेनिंग्स होती है, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, ये मेरा निश बना. जब वहां से मैं थोड़ा सा आगे निकला, मेरे को समझ में आया कि अब मैं कॉर्पोरेट में निश बना सकता हूँ, लीडरशिप को या टॉप लेवल को या ऑर्गेनाइज. तो मैंने धीरे धीरे उसका पढ़ाई किया, धीरे धीरे अपने निश को अपग्रेड किया, धीरे धीरे मैं अपग्रेड करता करता अब मैं लीडरशिप की और सेल्स की और मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स करने लगा. राइट, एंड जब मार्केटिंग और ये सब मैं ट्रेनिंग करने लगा तो अब मुझे क्लैरिटी आया कि यार ये सब का मतलब तो इनका, एक कॉर्पोरेट हाउस आया मेरे पास और उन्होंने कहा, भूपेंद्र तुम्हारी ट्रेनिंग के कारण हमारा बिजनेस 20% से इस महीने बढ़ गया. तो मैंने कहा यार इसका मतलब, मैंने इनका 2000 करोड़ का बिजनेस है पूना का, और इसको 20% से बढ़ना मतलब इनको 400 करोड़ का मेरे कारण फायदा हो गया. इसका मतलब मैं जो कर रहा हूं उसका डायरेक्ट बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है. तो मैंने कहा कैन आई बिकम अ बिजनेस कोच? तो नाउ आई बिकेम अ बिजनेस कोच. और जब मैं बिजनेस कोच बनने लगा, बिजनेस कोच करते 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 3-4 सालों से बिजनेस कोच करा किया, और बिजनेस कोच करते करते आई वाज लिमिटेड इन पुणे एंड इन वन एरिया ऑफ पुणे, क्योंकि वहां के बहुत सारे कस्टमर्स मेरे पास आ रहे थे, तो मेरी टीम भी उधर ही ध्यान दे रही थी, मैं भी उधर ही ध्यान दे रहा था. लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा कि यार पूरा मार्केट तो पूरे ग्लोबल लेवल पे जा रहा है, मुझे पूना के उस एरिया के बाहर कोई जान ही नहीं रहा है. अब क्या किया जाए? तब मैंने कदम रखा डिजिटल लाइफ में दोस्तों. सो अब क्या हुआ, 10 साल की ये जो जर्नी है, आज की डेट में मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कैसे देना है वो भी आता है, मोटिवेशनल स्पीचेस कैसे कंडक्ट करनी है वो भी आता है. आज मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह भी अच्छे से दे पाता हूँ, आज मैं बिजनेस कोचिंग भी अच्छे से कर पाता हूँ, और आज मैं डिजिटल कोचिंग भी अच्छे से कर पा रहा हूँ. बट देयर इज अ लिमिटेशन. लिमिटेशन क्या है? अब बिजनेस में बात आती है, मान लीजिए एचआर के डिटेल्ड सिस्टम की, एम आई गुड एट इट? नो. बात आती है सेल्स के डिटेल्ड सिस्टम की, एम आई रियली गुड एट इट? नो. सो व्हाट एम आई रियली गुड एट? आई एम गुड एट only transforming the team's mindset and businessman's mindset and systems, overall system. I can suggest them कि बॉस आपके फाइनेंस में ये 4 गलतियां हैं और ये सिस्टम लगाओ, और इस सिस्टम के लिए आप कोई तो कंसल्टेंट ढूंढो, नहीं तो आपको लगाना ही पड़ेगा. आई विल नॉट बी एबल टू डू इट because I'm not expert in putting that system in your company, but I can suggest you these systems. तो मैंने अपना निश बना लिया कि एक बिजनेसमैन और उसकी टीम के पूरे माइंडसेट को चेंज करना, दैट इज माय निश. धीरे धीरे मैंने जब लिमिटेशन को देखा तो मैंने कहा ओके, व्हाट इज माय निश? इज माय निश टीचिंग पीपल डिजिटल completely? No. My niche is actually changing your mindset and giving you that kind of a fire which nobody else probably can give you. Okay, that's my niche is. All right, सिस्टम, आई नो अगर आपका माइंडसेट सीख गया, चेंज हो गया, डेफिनेटली सिस्टम के लिए जो बेसिक्स आपको डिटेल में सिखाने हैं वो सब मैं सिखाऊंगा, क्योंकि वी आर यूजिंग ऑल दोस सिस्टम्स, इसीलिए मैं आपको सिखा पा रहा हूं. अदरवाइज आई एम नॉट, इट इज नॉट माय निश. माय निश इज टू क्रिएट अ ब्रेक थ्रू. ओके, माय निश इज टू मेकिंग श्योर दैट यू कैन चेंज इन अ मिनट. माय निश इज टू गिव यू दैट फायर, दैट हैमर, दैट पुश व्हिच इज नीडेड. ये मेरा निश है दोस्तों. मतलब अगर इंसान किसी और दूसरे कोच के पास जाके 2 साल में चेंज होता है, या अगर एक इंसान किसी दूसरी जगह पे या अपने खुद से 3 साल, 2 साल, 5 साल लगाता है बदलने में, I can help you reach there in 2 months. मतलब I can cut short that time by at least 90%. That's what my expertise is. So then I realized कि I'm
I'm not a expert when it comes to putting a system in the business or sales systems or marketing system. I have a niche, which is to change the extreme amount of mindset and give that fire to people. And I can lead that from the way. And that's why, dosto, now when I know my niche is, my macro niche is breakthrough, okay, so I can fit in everywhere, because I was looking at a niche which is applicable, because मेरा mind कह नहीं रहा था कि यार मैं सिर्फ स्टूडेंट सेलेक्ट करूं, तो मेरा माइंड कहता था यार लेकिन बट आई कैन कोच लीडर्स ऑल्सो. अगर मैं सिर्फ लीडरशिप सेलेक्ट करूं तो मेरा माइंड कहता था नहीं यार, आई कैन कोच सेल्स पीपल ऑल्सो. अगर मैं सेल्स पीपल सेलेक्ट करता हूं तो मेरा माइंड कहता था कि आई कैन कोच बिजनेसमैन ऑल्सो. तो should I leave businessman? No. Should I leave student? No. I don't want to leave. So I found a common niche which is called breakthrough, which can be applied to everybody, because whoever has a brain, now I am available. So now I can say I'm an expert in changing the mindset, attitude, and the thinking patterns of a person. I'm an expert in that, because that's why my training programs are like commando training. Okay. 90 days challenge every single morning, waking up at 5:30, getting connected to me, going through the huge challenge. Today's commando challenge of mine was 20 kilometers walk, 21 kilometers walk before 12 o'clock. और सुबह आप लोगों को पता है 5:30 से 7 मेरा कमांडो ट्रेनिंग था, 7 से 8 मेरा मेडिटेशन था, 8:30 बजे मैंने शुरू किया और मेरा टारगेट था 12 के पहले मुझे कंप्लीट करना. आई डिड इट. Tomorrow's commando challenge is 21 kilometers walk, 108 सूर्य नमस्कार, 108 push-ups, and अगर मौका मिला और टाइम मिला तो I will push myself beyond and I'll do 1000 skippings also. But again, I have to complete it before 12 o'clock. And again, I have a session till 8 o'clock. So I have only roughly 4 hours. So all the channels are like, I do cycle rally from Pune to Mumbai, या जो भी है, दिल्ली से मैंने ये किया, मैं अपने आप को फिजिकली पुश करता हूँ, मेंटली पुश करता हूँ. मैं जितने सारे वेबिनार्स और जितने सारे सेशन लेता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं ले पाते, क्योंकि this is what I really want. Okay? ये मेरा निश है. So I'm giving you the idea. पहला चीज तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि niche is going to be evolving over the period of time. Okay, you cannot decide a niche today and lifelong you can continue with the same. Okay, it will be evolving. Maybe you can choose a word right now. Okay, like I have chosen the word breakthrough, and this breakthrough word I have chosen, मतलब मैं 2010 से मैंने जब अपना काम शुरू किया था ना, तब से मैंने ये breakthrough word चूज किया था मेरे लिए. ओके, लेकिन बीच बीच में लोगों को समझ नहीं आता था ब्रेक थ्रू, तो मुझे दिक्कत होती थी उनको समझाने में, तो मैंने बीच में लिखना शुरू कर दिया, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर या कॉर्पोरेट ट्रेनर. लेकिन अगर सच बोलूं तो आई डोंट वांट टू गिव मोटिवेशन टू पीपल, आई वांट टू क्रिएट ब्रेक थ्रू एंड आई वांट टू गिव यू द strategy to create breakthrough in your life. So I'm a breakthrough strategist. Okay, and that's what I really feel. So पहली चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, niche will be evolving over a period of time. It is not a one-day process. Okay, it is a lifelong process. Okay, so let's understand one more thing about niche. तो निश एक तो धीरे धीरे आएगा. नंबर 2, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, निश विल स्टार्ट बिकमिंग ब्रॉडर 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 ब्रॉडर. जैसे कि हो सकता है जब शुरू आप कर रहे हो, आप सेल्स कोचिंग से शुरू कर रहे हो, जब आप सेल्स कोचिंग कर रहे हो तो सेल्स कोचिंग में भी यू आर जस्ट सेइंग देम कि हाउ टू सेल ओवर ईमेल. मे बी दैट इज द स्टार्ट, एंड यू नीड टू स्टार्ट लाइक दैट आई एम अ सेल्स expert and I teach you how to sell. So you may teach them the basic of the sell, and then you can say that I can show you how using just the email you can sell well. And then थोड़े दिनों के बाद maybe you get your knowledge, थोड़ा और आपको expertise आता है, then you can shift to the phone also. So now I'm an expert in phone and email sales. Then you थोड़े दिनों के बाद आप और ज्यादा सीखते हो, and then you can say I am an expert in sales. So phone, email and physical sales. Physical sales mean field sales. Okay, field पे जाके कैसे sales करना है, या physically one to one कैसे sales करना है. Then you can say I'm an expert in physical sales, telecom sales, या फिर email sales, and at the same time online sales through webinars कैसे sell करना I can teach you. Then slowly and slowly you can say, boss, I'm a sales expert in all these 4 areas, and now I'm also expert in selling only through the landing pages or websites or blogs. Okay, then you can go to a level wherein you can say I'm a sales expert, wherein I teach even affiliate marketing also. All right, so this is how your micro niche also becomes more refined. All right,
more refined micro niche becomes. जैसे मैंने जब digital coaching शुरू किया तो मैंने कहा ठीक है, I can teach you how to create your course, all right? Then I said, all right, I can teach you even Facebook advertisements. I can also teach you about, webinar selling. I can also teach you about how to get the leads for free. So your micro niche also starts growing, right? So that's what the power of niche is. So like a lot of people, I'll now take you to the flow chart so that we will create the flow chart together, and we will get to learn few things about niche. All right. So let me take you there. All right. So where we were. All right. So why niche is needed, I have already explained you. What does niche means? What is micro niche? I have already shared with you. Now, I told you that niche is going to be evolved over a period of time. That is the first thing which you need to understand. The second thing which I want to say is that जब niche over a period of time जब evolve होगा, आपको micro niche मिल गया आपका, then that niche also will be getting bigger and bigger and bigger and bigger and bigger. So idea of niche is very simple. पहला, एक जो सेलेक्ट हो गया या एक जो आपको मिल गया, बस उसमें आपको जिंदगी में पहले तो उसमें उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना है एंड वहां से शुरू करना है. सी टुडे व्हेन आई शिफ्टेड टू डिजिटल, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ डिजिटल में आने में. क्यों हुआ मैं बताता हूं आपको. मुझे जब डिजिटल कोचिंग में और इनमें आना था, प्रॉब्लम मेरे साथ ये था कि मेरे पास इतना सारा नॉलेज हो गया था कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए भी सेशंस कर सकता हूं, मैं कॉर्पोरेट्स के भी लिए कर सकता हूं, लीडर्स के भी लिए कर सकता हूं. तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं कहां से शुरू करूं और किसको छोड़ूं एंड कौन सा मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है और कौन सा मुझे कम प्रॉफिट देगा. ऑलराइट, देन दैट वाज अ बिग चैलेंज, हाउ टू डिजाइन माय फनल. तो ये मेरे बेसिक चैलेंजेस थे. बट आप लोगों के सामने ये चैलेंजेस नहीं होंगे बिकॉज यू नीड टू स्टार्ट विद वन. ओके, एनी वन यू स्टार्ट एंड देन स्लोली मेक श्योर अगले 6 से 8 महीने में यू मेक इट ग्रेट. एंड आई विल गिव यू द एग्जांपल्स, absolutely two examples of it. So there are two ways to find your niche. One is discover your vision. Okay, discover your vision. This is your ultimate vision for life. Okay, so जिस दिन ये मिल गया उसके बाद तो मतलब आपको ये छोटे मोटे challenges आएंगे कि नहीं, कि मेरा niche क्या होना चाहिए, कैसे नहीं. I'll give you an example. जैसे अगर शाहरुख खान को मिल गया कि यार मुझे तो अभी I really want to build my life and future entirely in acting and I'm so mad about acting. तो जिस दिन वो मैडनेस जो कि शाहरुख खान में है या सलमान खान में है या अमिताभ बच्चन में है या अंबानी में है या नरेंद्र मोदी में है कि यार भाई मुझे तो पॉलिटिक्स मिल गया, बस अब मैं जिंदगी इसी में बिताना चाहता हूँ. ओके, जिस दिन वो मिल गया उस दिन तो आपको कोई चैलेंज ही नहीं है, बिकॉज उसके बाद आप उसी में दिन रात घूमते यू विल बी एबल टू फाइंड इट. जैसे मुझे अभी मिल गया कि ट्रेनिंग के अलावा चाहे मुझे दूसरे फील्ड में कोई करोड़ों भी दे दे तो मैं नहीं जाऊंगा. हाँ, एक फील्ड में जाने की इच्छा जरूर है. ओके, एक तो मरने से पहले एक मूवी जरूर बनाऊंगा 10 से 15 करोड़ रुपए की, और दूसरा पॉलिटिक्स में जरूर जाऊंगा, 1-2 इलेक्शन तो लड़ेंगे. ऑलराइट, एंड ओनली बिकॉज उसमें भी अपनी ट्रेनिंग की पावर को इस्तेमाल करना है. दैट्स व्हाट माय गोल इज. सो मे बी आई विल बी गोइंग देयर इन द फ्यूचर. But I just want to say, once you discover your vision, you don't need to really do it. But then once your vision is there, बाकी सब steps हो जाते हैं. जैसे I want to change the country and I know how I can change the country is, number one, I need to become popular. And for that, I know Bollywood या politics के अलावा उतना popularity training field नहीं दे सकता जितना Bollywood and ये दे सकता है. So I need to make 1 or 2 movies. It's absolutely 101% sure. Number one. Number two, अगर मैं मूवी बना रहा हूं या पॉलिटिक्स में जा रहा हूं तो बिकॉज ऑफ दैट आई कैन चेंज द कंट्री. सो माय विजन इज टू क्रिएट अ मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री. ओके, सो दैट द एंटायर कंट्री कैन बेनिफिट एंड एंटायर कंट्री कैन चेंज. आई वांट टू क्रिएट अ ब्रेक थ्रू in the minds of the citizen. That's what my vision is, and I have got that vision. अब मैं जो कर रहा हूं, those are just the steps. So this is the first one. Okay, discover your ultimate vision. So I want you to here understand one very important thing. I have if you discover your vision today, then in 10 years, in less than 10 years, you will be a global name. Okay, you will be a global name in less than 10 years. The day you discover your vision, from that day, in 10 years, you will be a global name. Guys, I discovered my vision in 2014 end. Okay, उसके पहले मुझे हल्का आइडिया लग रहा था. 2009 में मुझे थोड़ा आइडिया लगा तो मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, मैं इसमें आया. 2012 में मुझे थोड़ा और डिटेल आइडिया लगा तो मैंने अपना सब कुछ छोड़ के आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग बिग.
लेकिन 2014 के एंड में तो मुझे पूरा क्लैरिटी आ गया कि यस, आई वांट टू क्रिएट अ चेंज इन द कंट्री, आई रियली वांट टू डाई फॉर द कंट्री एंड लिव फॉर द कंट्री. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट हैज सर्व्ड मी अ लॉट. अभी तो कितने 5 साल हुए हैं सिर्फ, एंड इन 5-6 years, I think sixth year is on. In just 6 years I have traveled across the world. नहीं तो 2014 तक तो मेरे पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि 50,000 रुपए या भी मुश्किल से 1 लाख रुपए कभी आ पाता था तो आ पाता था घर पे. मतलब 2014 में तो I left my company and I was sitting at home and I was devastated completely. I didn't know what to go do, where to do, what to do, and बहुत सारे challenges. But then in last 5 years, just ever since I found that vision, it has given me a great life. And I'm telling you, by 2024, Bhupendra Singh Rathore will be known to the whole world. Okay, I commit to this. And not only this, there is another student of mine, Spurti, and out of so many students I have, I think she's the one who has got her vision clearly. Okay, and because of that, in just less than, I think, she started her journey in training and all in 2014. All right, in fact, 2014 or 15. And today by 2020, she's a well-known name. She recently learned this digital course from me. Okay, recently, I think 6 months back or 6 months back, she enrolled for it, and then she started learning it gradually. She did her first webinar 3 months back, and I think till date she has only done 5 or 6 webinars. And she has already closed a sale of around 4 lakh rupees. Okay, 4 lakh rupees ka kal uska message aaya. I'll show you that message so that you guys believe in it, and you can understand that. And I'm going to probably forward the screenshot also to you, because I want to give you the proof that it works, guys. It's not that I'm talking just in the air. Okay, I want you to understand. Yesterday, I don't know whether you can see it here. Okay, the last line. Okay, yesterday I sold 17. 1,999 was the fee out of 70. Okay, can you read that? So yesterday I sold 17 out of 70. Can you imagine what kind of a sales skill she has developed? And her entire training has been done by me. Okay, right from public speaking, right from sales training, right from execution. And today also, like every single day, we are in touch, and we are able to understand each and everything every day. Okay, so that's the power, my dear friends. That's the power which you guys can have. Okay, so ultimate vision, and because of that vision, today she shares the stage with many celebrities. But let me tell you, her vision is to also transform the youngsters. Her vision is to transform the young India. Okay, and what she is doing for this, in fact, she says it very beautifully that I want people to create something out of nothing. That is her vision. Okay, that's what she wants to do. और जब वो चीजें कर रही है, तो I'll tell you, she had nothing. She had no knowledge, no public speaking skill, no selling skill, no idea क्या करना है क्या नहीं करना है. She found out कि भैया भूपेंद्र, एटलीस्ट मैं ये तो कर सकती हूँ सर कि मैं बुक लिख सकती हूँ. और उसने बुक लिखने की सोची. उसने बुक लिखने के साथ साथ, अच्छा, बुक लिखना इज नॉट हर अल्टीमेट गोल और निश, राइट? बट नाउ हियर कम्स द सेकंड थिंग. जब तक आपको विजन पूरा नहीं मिलता है, या विजन को सपोर्ट करने के लिए, विजन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, राइट? शी हैज गॉट हर विजन, बट विजन को सपोर्ट करने के लिए उसके पास कोई स्टेप्स नहीं थे, तो स्टेप्स आपको बनाने पड़ेंगे. तो यहां पे she chose a niche. स्टेप्स बनाने के लिए now you need to choose a niche. अगर आपके पास विजन नहीं भी है तो you need to start choosing the niche. अब how do you choose the niche? You need to choose the niche, number one, by research. Research which I did when I was in 2011-12, when I was doing a lot of corporate trainings, I got to realize कि यार corporate training में तो मैं saturate हो जाऊंगा, क्योंकि corporate training
मैं बहुत सारे ट्रेनर्स आ रहे थे, मैं जाता था कॉर्पोरेट, एक एक 10-10 हज़ार रुपए की ट्रेनिंग लेने के लिए कई बार हमें 20 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। एक एक मीटिंग होती थी, कस्टमर 3-3 बार बुलाता था और उसके बाद फाइनली कहता था ओके भूपेंद्र, योर प्रोफाइल इज शॉर्ट लिस्टेड, सो वी विल गो अहेड विद यू, और एक 10,000-15,000 रुपए की ट्रेनिंग मिलती थी। मतलब 15,000 रुपए खर्च करके 15,000 की ट्रेनिंग मिल रही है। राइट, आज तो खैर ऐसा नहीं है, आज तो मैं सीधा फोन पे बोलता हूँ, यू हैव सीन माय प्रोफाइल, प्लीज लेट मी नो व्हाट टू डू, बट नाउ इट इज पॉसिबल। उस समय नहीं पॉसिबल था। आई रियलाइज्ड कि यार दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। हाउ कैन आई मेक, अगर मुझे, मैंने उसी समय सोच लिया था कि अगर मुझे 5 करोड़ रुपए महीना कमाना है तो ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में तो नहीं होगा। सो आई स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च. I started understanding few more foreign trainers. Then I realized that they all are making their brand big by going in the open market. ओपन मार्केट मतलब खुद के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, खुद के प्रोग्राम में 1,000-2,000 लोगों का क्राउड लाना, खुद के प्रोग्राम के थ्रू सेल करना और खुद ही स्टेज से सेल करना, ये सारी चीजें मेरे को समझ में आ गई। सो दोस्तों, बिकॉज ऑफ दैट देन आई गॉट टू सी दैट द बिगेस्ट उस समय the biggest speaker in the country, one of the biggest speakers in the country was Santosh Nair. Okay, so I said, that guy is making money. How? Okay, then there was one of my coaches. His name was Manish Gupta sir. So I got to see both of them were in business coaching. Then I got to realize that okay, many other people like Anthony Robbins, they were also doing business mastery. I said, okay, now I need to become a business coach. Okay, because in business coach, from one customer I can charge 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh also. अब प्रॉब्लम ये आया कि हाउ डू आई बिकम अ बिजनेस कोच, क्योंकि मुझे तो कुछ स्टेप्स ही नहीं पता थे. राइट, सो व्हाट आई डिड वाज आई हायर्ड अ बिजनेस कोच फॉर माई सेल्फ. हायर्ड अ बिजनेस कोच, क्योंकि देखो, अगर आपको आज मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो यू जस्ट, there are two ways, either you attend lot of business coaches या फिर motivational sessions, या फिर you hire a motivational coach for your coaching, and then you see the style and everything, and then you learn from them, and he can guide you completely step by step how you need to become. So I hired a business coach. When it comes to, let's say, Sfurti, she did a bit of research. She got to see in her research that 3 things. One, that India में 3 ही चीज popular है. Okay, she figured out that she needs to write a book because she got to realize that एक book आपको talks भी दिला सकती है, celebrity के साथ engagement भी दिला सकती है, अगर अच्छा publisher मिल गया तो lifelong royalty भी आ सकती है, passive money भी आ सकता है, and it can give you the authority because she was nobody, and now if she writes one book then she can become somebody at least. All right, so she did her own research and she realized that she needs to write a book. लेकिन जब बुक की बात चल रही थी तो उसने कहा यार बुक, लेकिन बुक क्यों खरीदेगा मेरी कोई. तो मेरी जब बुक आई उससे उसको इंस्पिरेशन मिला बुक लिखने का, तो शी सेलेक्टेड द बुक. लेकिन शी गॉट टू सी, 1 महीना हो गया था, उस समय मेरे पास ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे, तो मेरी बुक की शायद 100-150 कॉपी बिकी. तो उसने ये रियलाइज किया कि यार व्हाई वुड पीपल बाय अ बुक, राइट. Then she did a bit more research and she realized that 3 तरह के फील्ड इंडिया में सुपर हिट है. One is politics, one is Bollywood, and one is cricket. She said इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे अगर मैंने बुक लिखी तो I will probably be able to sell more books. That was the power of research, right? Guys, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा कभी-कभी टाइम लग जाता है. And then she chose a title called महेंद्र सिंह धोनी. Okay, मतलब धोनी के ऊपर उसने बुक लिखी and her book became overnight success. Now she's writing a book on Virat Kohli. Now writing the book has become her niche. Okay, so see, डिस्कवर द विजन. उस समय स्फूर्ति के पास भी विजन नहीं था, शायद उस समय मेरे पास भी क्लैरिटी का विजन नहीं था, या जब विजन आया, विजन थोड़ा सा बाद में भी कर सकते हैं आप, क्योंकि धीरे धीरे विजन के ऊपर तो दिन रात आपको सोचना पड़ेगा. आई डू अ सेशन कॉल्ड डिस्कवर योर विजन कंप्लीटली. इट इज अ 2 days रेजिडेंशियल प्रोग्राम and that I share with you. I have an online version of that program. Residential program is I think 30,000 rupees, and online program is around 8 to 9,000 rupees. So you can decide if you ever want to take it. But choosing a niche is now number 1 by research. Okay, so you do a little bit of research. Number 2, you check what's more profitable. Okay, so many a times people say, I don't like this from the heart, I like this from the heart. I'm telling you, अगर जो आपको दिल से पसंद है, what if you cannot make profit in that? Okay, will you be happy? No.
right? There are so many artists, so many people who come to me and they say, hey Bhupendra, I like it and I've been doing it for the last many years, but yeah, I'm not able to make the profit. I said, then leave it. Well, then lying, but I love it so much and I have a hope, then continue it. If you have hope, continue it. So pehla to, is your niche super profitable? Because let me tell you very, very clearly, अगर ये profitable है और जब account में पैसा आने लगेगा इससे, तो automatically आपका उसमें passion भी आ जाएगा. It's my real, understanding of human mind. कई लोग, मार्बल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जा रहे हैं, उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं था शुरुआत में, लेकिन उन्होंने एक मशीन लेके ऐसे ही मेहनत करते करते थोड़ा थोड़ा बिजनेस कर लिया एंड देन एकदम से बहुत पैसा आने लगा. नाउ दे डोंट वांट टू लीव दैट एवर. सो लेट मी बी वेरी क्लियर, once you make money it will become beautiful for you. Once you have more money it will be more more powerful for you. Okay, so money is one criteria on the basis of which you should select your niche. All right, I don't want you to really put a, you might be good at teaching people drawing, okay, maybe the kids. Somebody can say, no, my interest area is, I really love those small kids and उनके साथ थोड़ा खेलना, उनको कर लो, कोई बात नहीं, वो निश कर लो, फिर महीने का 15,000 ही कमाना, फिर मिलियनर बनने का सपना मत देखना उसमें, right? Because that niche may not be very highly profitable niche. अच्छा, highly profitable है वो niche अगर आप उसको उसके अराउंड एक बिजनेस मॉडल बना सको, तो जैसे कि किड्जी स्कूल ने बनाया है, जैसे कि बाइजूस ने बनाया है, राइट? इफ यू कैन मेक अ बिजनेस मॉडल लाइक बाइजूस अराउंड इट, जिन्होंने बच्चों के सारे कोर्सेज, आई मीन रिसेंटली दे आर crazy. Recently somebody from Byju's came at my place and he said, hey, why don't you enroll your kid into Byju's classes? So we said, what will happen? Well, per year the fee is 2 lakh rupees. What? And digital courses, we will give you the workbook and ye and wo game se sikhayenge, sab kuch sikhayenge. And to be very honest, it was lucrative. All right, I always felt like going for that, but I don't want my kid to be just stuck to digital initial phase of his life. I said, no, we will enroll him for physical workout classes, gymnastic classes, skating classes, maybe something else, but not the Byju's at this moment. But then मैं कहना चाहता हूँ कि Byju, you can make that also a profitable business as long as you have a business model, or as long as you have that kind of a passion that yes, I can really make it a business model. But that will be taking time. But for all of you right now, I would like you to select a niche which is more profitable. Okay. So suppose you are really good at teaching English. It's a profitable niche. It's a very profitable niche, to be very honest. Okay. India में 95% people still do not know English. 95% लोगों को अभी तक अंग्रेजी नहीं आती है. All right. And there is no shame. By teaching spoken English online, you can have at least 1,000 students enrolling your class every single month. Okay. You give the course in 1,000 rupees, 2,000 rupees initially. Who says? And then धीरे धीरे जब आपका बहुत बड़ा fan following हो जाए, you can increase the prices. All right. That is what you can do. But first thing, so पहला, choose a niche based on research. दूसरा, choose a niche based on what is more profitable. Okay, because if you get into a niche which is not profitable, then it's going to be really disaster. Okay, the third thing which I would like to say, okay, every niche can be mastered or learned about in less than 6 months. Okay, I'm not talking about the niche like becoming a scientist here. Okay, I'm not talking about the niche here which is like becoming a doctor. Okay, but here I hope if you want to become a doctor, you are not going to be in this webinar. All right, if you want to become an engineer, you are probably not here. So if you are here, means you want to make money from internet. If you are here, it means you want to make money from coaching. It means you want to have passive income. All right. Now, let me tell you, today, if you decide to become a business coach, okay, which is a very highly profitable business, and you will see me going to
this year we are going to touch 10 crores, and next year you will means before 2025 you will see us touching 100 crores because of business coaching, not because of breakthrough personality or digital course academy or coach mentorship, but because of business coaching, because that's I can create business breakthrough in the minds of people. All right, now I want to say that every niche can be mastered. I was not a business coach, to be very honest. जब मैंने business coaching शुरू किया मेरे को कुछ नहीं आता था business coaching में. तो मैंने क्या किया, I will tell you how you can do and how you can master that niche. पहले तो I was convinced. All right, first thing, there are few steps. You need to be convinced. मतलब I was super confident that ये जो business coaching है, this is gold mine and this can really give me a lot of money and fame and name, and I love to associate myself with top businessmen, entrepreneurs. I would love to love the CNN channel to interview me around business. I would love to have my interviews published in business magazines and everything. I want to be on the cover of the magazine and all. I said, what is my niche then? All right. So I got to realize that, yes, I am convinced that business coaching is something which can give me. I'm giving you the example. So pehla step hai, you need to be convinced yourself. Okay. Once you are convinced about yourself, again, your study starts. You need to start your study. So when when you need to get into the business coaching. So when I wanted to get into business coaching, what I did, you know what? I ordered around 25 books in one single month. Okay. Not one single month, in one click. One single month, nahi, one single day. एक ही दिन मैं amazon.com पे बैठा and मैंने 25 बुक्स ऑर्डर की. ये बुक्स मुझे किसने सजेस्ट की? ये बुक्स मुझे सजेस्ट की, there was a coach who I had. So I told you that I hired a coach. I hired a coach because I believe in very simple thing. अगर आपको कोई भी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो hire a coach. Hire a coach who can guide you step by step. अभी मान लीजिए आपने कल affiliate marketing का सीखा. अगर आप कोच हायर करके वो नहीं करते तो आपको कम से कम, या तो आप कभी उसके बारे में नॉलेज लेते ही नहीं, लेते तो बहुत आलसीपन से लेते, किसी दिन 15 मिनट देखते, किसी दिन 1 घंटा देख लेते, किसी दिन बिल्कुल नहीं देखते, और उसमें भी आपका टाइम जाता कि कौन सी साइट पे ऑथेंटिक नॉलेज है, कौन सी पे नहीं है. सो हायरिंग अ कोच इज द ऑलवेज सेफेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट स्ट्रैटेजी माय डियर फ्रेंड. क्योंकि आपको ये लग सकता है जब भूपेंद्र सिंह राठौर हर बार बोलेगा कि भैया इसके आगे का आपको चाहिए तो कोच मेंटरशिप पे जाओ, क्योंकि दोस्तों आई अंडरस्टैंड, if I keep giving you everything in 3000, then I'm going to be bankrupt in my life. All right. I need to lead the path and lead the chart of the whole world. And how can I lead that chart is when I'm going to teach you how can you make 10 crores. I have all the rights to charge because I'm sharing with you that knowledge which I've got hard-earned with lot of struggle by spending a lot of money and over the period of last 11-12 years. Okay, that is the knowledge which I'm sharing. So please don't mind if I become sometimes direct about money and I start telling you that you need to go to my next level and then only I'll give you, because see, this is how I want it. And if you feel bad about this, then God bless you. I can't do much about it. Okay, क्योंकि अगर आप इतना छोटा सोचोगे कि हाँ 5,000 10,000 एक्स्ट्रा नहीं इन्वेस्ट करना है, तो obviously you will not be able to make $1 million also. It's not possible, right? Last month I have invested 5 lakh rupees in joining a course called Quantum Leap from Success Gyan. Okay, जो भी वो वहां पे सिखा रहे हैं वो मुझे पूरा आता है, सब कुछ आता है. But why I'm doing it is very simple, because that opens a door for me to get associated with Success Gyan, so that Success Gyan can notice what I am doing, and tomorrow in future when they need a trainer, they can call me. All right, and that's why I'm opening the door. So by going to the next level of there, and I plan to do there another program which is 11 lakh rupees program. I want to do that also. Q, because I know I want to share the stage with Anthony Robbins, and for that I am preparing. Otherwise, if I keep waiting, someday I will become a big trainer and then Anthony Robbins will get inspired by me and impressed by me and he will call me to share the stage. I mean, that way it doesn't work. In my capacity, I need to open the paths and open the channels. In future, what will happen, God knows. So what I did was, you need to start your study. So I ordered 25 books in one single day. I hired a coach, and then I got
completely immersed into it. एक महीना दोस्तों मैं घर से बाहर नहीं निकला. उन 25 बुक्स को मैंने चार्ट दिया. Let me tell you what is the greatest quality which I have. I have the greatest quality that if I decide to do something, all right, then I really go mad behind it. In fact, I'm a very good student. अगर मेरा टीचर मुझे कहता था कि 100 घंटे प्रैक्टिस करो, तो मैं 200 घंटे प्रैक्टिस करता था. I never give my less, right? That's my biggest quality, and I really want each one of you to have that quality also. Okay. So I ordered 25 books, and which were those books? Good to Great, Great by Choice. Then the third one was this Build to Last. Fourth one was Top Grading. Then there was a book about positioning, sales positioning. ऐसे करके 25 books in one single day I read about business, only about business. In month, sorry, एक दिन में ऑर्डर करी और कोई बुक आज आ गई तो उसको आज रात में पूरा खत्म कर दिया. दूसरी बुक आई, कल आई, फटाफट उसको पढ़ना लगा. 1 से 1.5 महीने में 25 बुक किया. So your study starts here. Hire a coach, study, get complete immersion into it. All right. So immersion completely मतलब इसमें डूब जाना है फिर थोड़े दिन के लिए. जैसे अभी आप डिजिटल कोर्स एकेडमी सीख रहे हो और आपको सच में अपने कोर्सेज क्रिएट करने हैं, तो I can just give you the glimpse about your niche, because it is not the workshop wherein I can teach you entirely vision, because वो separate 2-3 दिन का workshop है. All right. लेकिन यहाँ पे I feel that you already know something about it, right? You already have a fair amount of idea what it is. Otherwise, I can guide you to select one of the niches. All right. लेकिन जो भी profitable niche है, so पहला you need to be convinced. Second, you need to start your study into it. Okay. Then you need to start going live. Need to start going live. You know, then I started going and coaching businessmen. I started claiming that, hey, I am a business coach. All right. So how do you go? By start claiming that you are doing this. Start advertising. Claiming, start advertising. So I started advertising, hey, I'm a business coach, I can change your business. जबकि मैंने अपनी जिंदगी में अपना business turn around नहीं किया था, और मैं दूसरों को कहने लगा, I am a business coach, I can turn around. Because see, जब मैं शुरू में स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे पास ना तो टेस्टिमोनियल होने वाले हैं. आप भी आज अगर शुरू में स्टार्ट कर रहे हो तो how would you have the testimonial? You will not have the testimonial, right? You will not have any kind of accolades, awards, nothing will be there in the beginning. So I also did not have anything in the beginning. स्फूर्ति ने जब लोगों को कहना शुरू किया कि I am an author, तो उसके पास कोई book नहीं था. Right? She was just telling that I write here and there, and I write a blog, and I'm writing a book on Dhoni and this and that. So initially nobody cares, but initially you will have to face the customer. Okay. Now when you started facing the customer, you learn on the go. All right. So when I used to go to the customer, I used to see a new issue. तो वहां पे मेरा एक ही काम होता था कि okay, new issue, how do I answer this? All right, I'm feeling bad. Oh, I don't know it. So I used to say, all right, sir, that's a great thing. Give me just 1 day's time and I'll get back to you, because I'll have to check this and I'll let you know. So kabhi smartly I had to buy the time. Then I used to come back and do the research, and then you learn it on the go. So दोस्तों, everything you learn on the go. All right. आज से जब 1.5 साल पहले मैंने जब अपना डिजिटल कोचिंग स्टार्ट किया तो इट वाज नॉट एज पॉलिश्ड. आज मैं जिस तेजी से ये आपके सामने बना रहा हूँ, ये डायग्राम एंड ऑल, दिस वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी 2 years ago or one year ago. Right. I did not have so much of knowledge about affiliate marketing when I started 1 year ago, 1.5 years ago. I think I started exactly 1 year ago. उसके पहले तो थोड़ा बहुत ऐसे ही just R&D था. All right. But in 25th March, I did my first webinar, I think, last year, which was a proper full focused webinar. So you learn on the go. Then धीरे-धीरे आप जैसे-जैसे करते जाते हो, you start learning. So I will tell you one thing. What's more profitable? That is the kind of niche you need to choose. So choosing the niche, पहला research. थोड़ा रिसर्च करो, व्हाट्स वर्किंग इन द मार्केट, किस तरह के लोग वेबिनार्स कर रहे हैं. तो अगले 5 दिन सिर्फ ध्यान से देखो किस तरह का प्रोग्राम बिक रहा है, कौन से प्रोग्राम में जल्दी लोग कन्विंस हो रहे हैं. व्हाई डिड वी लॉन्च ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी कोर्स? ओके, I don't want to go back to personality development training, all right? But just by doing a webinar in a month,
or maybe in a month, just by giving my 6 to 7 hours, if I can make 10 lakh rupees, it's a profitable niche, right? So that is why I said, what's more profitable? Select it and choose it. आप में से हर कोई, अगर आप डिजिटल कोर्स एकेडमी में है या ब्रेक थ्रू इसमें मिलियनेयर क्लब में है, I would recommend you to buy this breakthrough personality course. It is just 3,000 rupees course, okay? And you will learn almost everything in this course, like public speaking, your English improvement. अगर आपको करना है तो English improvement, just invest 3,000 rupees and learn it as soon as possible. But then this is what I do. Why I've launched a course on English, because I know it is a profitable niche, but I'm not going to market it separately. I'm going to give it as a part of personality development. अगर किसी मिलियनेयर क्लब वाले को भी चाहिए तो मैं उनको दूंगा. किसी कोच मेंटरशिप वालों में किसी की अगर इंग्लिश कमजोर है तो मैं उसके साथ उनको कॉम्प्लीमेंट्री देता हूं. So whatever is more profitable, you can be present in that. All right, there's no harm, because my job is to nurture my community wholeheartedly. अब मेरी community में कुछ लोग आ रहे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कुछ लोग आ रहे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम मैंने क्रिएट कर दिया, and that's how I choose my niche. So my dear friends, why I'm doing Digital Course Academy? Because it's profitable niche. Every week I close a sale of around 2 lakh rupees out of it. Okay, why do I use coach mentorship? It's a profitable niche because everybody wants to become a trainer nowadays, right? Why do I choose business coaching? So अब कई लोग कहेंगे, सर आपने इतना सारा क्यों कर लिया? See, over a period of 10 years, everything is evolving. Okay, now I can easily do it without investing too much of my time in preparation. ये जो course आपको मैं niche clarity पे अभी दे रहा हूँ, do you think I have prepared for it? No, it's in the mind, right? This is how I have been doing. I just need to share with you my experience and what I've been teaching people over the last 10 years. And that's the exact same thing which I've. So every niche can be mastered or learnt about in less than 6 months. जैसे कि मैंने business coaching सिर्फ 6 महीने में की, स्फूर्ति ने book writing सिर्फ 6 महीने में की. आप में से कोई भी webinar करना किसी भी topic पे 6 महीने में सीख सकता है. It's up to you, right? So if you are really good, and once you are there, you have chosen your niche, then repeat things and earn money, or I would say improve things and earn money. All right, keep improving, keep on improving, do better than the previous year. फिर जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाए, reinvest, relearn, reuse, and then one day you get known to it. Right? So improve things and earn money. I would say here one more step in between can come, and that is market your niche now. Market it like mad. Okay, like a mad person. But यहाँ पे एक बहुत important चीज, जो सबसे important point है, वो ये है, you need to be convinced. In fact, I would like to use a word यहाँ पे, you must be convinced, right? You must be convinced कि हाँ, it can give me money, and then you do not need to deviate till you really make it good. Okay? जैसे जब तक मेरा कोच मेंटोरशिप का पूरा मॉड्यूल बन के तैयार हो नहीं गया, तब तक मैंने ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी को लॉन्च नहीं किया. इट इज नॉट पॉसिबल, because I don't want to have 5 things going simultaneously. Have one thing, be super convinced कि यहाँ यार ये दूसरे 10 लोगों के साथ काम कर रही है तो मेरे साथ भी काम करेगी. Alright? So you might be a fitness trainer, okay? You might be a yoga teacher, you might be a meditation master, okay? You might be a person who is just teaching people cooking. तो आप कुकिंग सिखा सकते हैं, आप किसी भी चीज के ट्रेनर हो सकते हैं, आप किसी भी चीज के कोच हो सकते हैं, आप किसी भी चीज का कोर्स क्रिएट कर सकते हैं. बट you must be convinced that yes, enough people are making money in this. Okay? क्योंकि कई बार हमारा माइंड कहता है यार कोई भी किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा तो will I be able to make money? No, that doubt is not going to be, remember that 1% doubt, 100% doubt. So you are not supposed to have the doubt. So जितना ज्यादा doubt, उतना ज्यादा problem. So you must be convinced. Like I'm super convinced about, कई लोग मेरे पेरेंट्स वगैरह, बीच में मेरे ऊपर काफी सारे लोन्स वगैरह हो गए थे और बहुत चैलेंजेस चल रहे थे, स्पेशली इन 15-16 में तो आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. 17-18 में आई हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो माय पेरेंट्स वर लाइक, तुझे 10 साल हो गए इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, तू हमेशा ट्रेनिंग कहता था, अभी तक तूने इतना पैसा नहीं कमाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अभी तक तो तेरे पास करोड़ों होना चाहिए था.
all this, but I had always conviction. I know that in this industry I can even reach to 1,000 crore, and that is my conviction. I can rule the country, I can rule the world in this industry. That's what my conviction is, guys. So never judge me based on what I'm doing right now. I know how much is the belief system I have and what can I do. In the same way, you need to have 1,000% conviction that you can do it. You can do it. Otherwise, nobody else can make you a great person in this field. Is that clear? Does that make sense, everybody? Okay. Does that make sense? Okay. I will take some of your questions here. All right. So, sir, which niche is in demand, right, in corporates? So tomorrow we will discuss that. Tomorrow's session, don't miss. We will discuss that in detail as to which niche is in demand. And I will suggest you at least 20, 30 good niches. All right. Very nice. I'm missing last affiliate marketing session, sir. So no problem. You will get the recordings of it. Affiliate marketing का blueprint का जो session आप लोगों को promise की है, वो session का आपको इसी में आपके club हो जाएगा course में, and then you will be able to get it. So, all right. Yes, you can check my video about 10 best books on the YouTube so that you will get to learn about 10 best books. And then I have written a blog about 100 best books on my website. So go to my website, CoachBSR.com, and access that blog. So second level purchase just after end of webinar. All right. Yeah, you can do that. All right. Thank you so much. I think we are done this webinar right now. I have another webinar at 9 o'clock, so we'll not be able to stretch it, but just learn it. I hope this information is good. In just one line on one word, please share your feedback, and I'll take only one or last question. Yes, this video recording will be available on Millionaire Club, and this video recording is going to be available on this additional session, which is a niche clarity session. Earlier, you know, जब आप digital course mastery वाले जो भी आए थे, I did not promise niche clarity to you all, but then later on we thought it is the most important topic and we should give you the access to this. All right, that's why we are giving you the access. So can you share some names which can be which we can build our team? I will share with you tomorrow. Website development, digital marketing, personal development, and business coaching में है. मेरा macro niche क्या है? Tomorrow we will go deeper in that, Chandan. So don't miss tomorrow's webinar. All right. Thank you. Super clarity. Everybody is good. All right. Thank you so much, and God bless you. Good night. Take care. Bye bye.